Okay, so practically when you are think you are an automation engineer, जब आप एक automation engineer के तौर पे किसी field में जाते हैं and you are given some kind of think like an automation engineer, think as like an automation engineer. So the task will be like solve some kind of जो हमें काम मिलेंगे वही होंगे solve PLC or programming task, ठीक है, programming task जिसमें you may be needed to write a program for PLC, उसकी पूरी logic develop करेंगे और HMIs और उनकी tagging करेंगे, ठीक है, and then you further use it in the DCS system. So the PLC logic takes care of safe start and stop of motor, ठीक है, एक छोटी सी इस टास्क से PLC start होता है. HMI and DCS will, and further I should include SCADA. SCADA is basically mainly for monitoring, इसलिए मैं उसको mention नहीं कर रहा था. So the DCS will take care of the whole unit. Whole unit means कि जो पूरा का पूरा हमारे पास plant है, ठीक है. I should. So in this sense अभी हमने जो focus किया था, जो target था हमारा पिछला lecture और quiz था, it was about a specific PLC program logic. But when it comes to the whole plant, तो जो solve है आपके पास एक ये भी हो सकता है कि solving a programming task for the PLC, and it may be developing or integration or revamp, इसको कहते हैं हम factory revamp के तौर पे, integration or improvement in existing automation like HMI, PLC or DCS system, ठीक है, and you have to work with the different vendors हैं, कोई एक system नहीं होता. Integration, this is called integration. So इसके लिए सबसे पहले चीज ये है कि we are going to deal with the job will be big, यानी इस पूरी जैसे bottle line simulation का है, it is a very small unit within a plant, even within a plant. तो उसमें आपको कोई एक दो मोटर्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कहीं सेंसर ऐड करना है, लॉजिक इज नॉट सफिशिएंट, कुछ मे बी 20-30% अभी इसका ऑटोमेट रहना बाकी है. इट मे बी अ मैनुअल, फ्यू थिंग्स मे बी मैनुअल जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो हो सकता है 10-20% आपने ऑटोमेशन फर्दर इसमें ऐड करनी है. इन आइदर केस हमारा जो टास्क होता है इट विल बी नंबर 1 जो अभी हम इसके लिए डेवलप करेंगे. अब हम इस प्लांट को देखेंगे and we will develop an IO list. The second thing we will do is the developing the operation and control philosophy. ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा लाइट मोड में क्लास में स्टार्ट किया था. So the first thing goes here. पहला टास्क हम इस प्लांट का करते हैं, which is the IO list. IO list को अब हम कैसे बनाएंगे? Quite simple. कि IO list के अंदर can you tell me this will be like इसमें आप IO list को किस तरह से बनाएंगे? The addresses, number 1. Second thing will be, what about after the addresses? इसके ऊपर आपके पास सेंसर या एक्चुएटर जो भी आपके पास कनेक्टेड है वो कौन सा है? And then we will have further description. So we will start from here. सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे मेन कन्वेयर है हमारे पास O2 0 पर. सेंसर्स कितने हमारे पास हैं टोटल? कैन वी काउंट देम? पहले हम
मोटर से देखते हैं, ये मेन कन्वेयर है हमारे पास O20, so the address is O2/0 and this is our main conveyor motor. ठीक है, ये मेन कन्वेयर मोटर हमारे पास है. And then we have some of the displays here. Small, large, scrap boxes हैं. एक और यहाँ पे जो सेंसर आपके पास है, this is LS limit switch, LS1 I16. ठीक है, मैं भी सिर्फ LSI सॉरी इसका एड्रेस है आपके पास I16. So the address is this. I16 है, ठीक है, this is one. I16 है, and then we have this LS2 limit switch 2 I17 के ऊपर है, और ये हमारे पास एक और इनपुट है जो कि है I18 पे. अच्छा, ये तीनों इनपुट्स क्या कर रही हैं? I17 पे है और I18 पे है, ये तीनों क्या कर रही हैं? And then we have filling, दो यहाँ फिलिंग स्टेशन हमारे पास दो एक्चुएटर्स हैं. This is the small charge, this is the larger fill. तो हमारे पास जो बॉटल्स अब आएंगी वो डिफरेंट साइजेस की आएंगी कुछ वो. पहला जो आपके पास है, this will LS1 will be looking for the bottle. This will be the size, this will be the कि बॉटल आपकी ब्रेक तो नहीं है, ये टेस्ट करेगा. और अगर आपके पास जो बॉटल अगर ब्रोकन हो तो आपको उस तरह से उसको वी हैव नाउ एक्चुएटर्स हियर. ये एक आपके पास है स्क्रैप गेट. तो अगर जो भी बॉटल आपके पास टूटी हुई यहाँ से आएगी, सो यू हैव टू स्विच दिस वन स्क्रैप गेट. स्क्रैप गेट को आप करेंगे तो द बॉटल विल बी will come here, down here. ये स्क्रैप गेट, और यहाँ से यहाँ आपको एक छोटा सा होल नजर आ रहा होगा. This will open and the bottle will fall to this grinder. Grinder का एड्रेस आपके पास है O23, right? So I will keep doing. अच्छा, हमने ये तीनों कर लिए थे. अच्छा, इनका क्या पर्पस है? This is the कि यहाँ पे आपके पास बॉटल मौजूद है. So this is the sensing bottle. अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड हमारे पास है, this is the size of bottle. The third one is the broken or not. Broken test है ये, ठीक है. इसके अलावा we will continue. Large fill. This is the output large fill O27 and O28. So O27, it is the large fill or solenoid. O28 is the small fill. Okay. फिर हम देखते हैं यहाँ पर this one कैप रैम है जो कि इसको कैप लगाएगा. O9 पे कैप लगाने के लिए है. This is our scrap gate 24 पे. 24 पे हमारे पास है scrap gate. अच्छा, and then we have a grinder here. O23 पे. So scrap gate से जैसे आएगा तो O23 पे आपके पास जो है ग्राइंडर है. I think this is a limit switch for the boxes, LS10.
I15 के ऊपर, I115. This is the limit switch for boxes on conveyor 2. ये जो आपके पास स्क्रैप कन्वेयर है, by the way we have 3 conveyors here. एक conveyor ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है. And then we have it, हमारे पास यहाँ पर है. Let me complete this, फिर मैं आपको इसका snap लेके फिर दूसरी तरफ मूव कर दूंगा. Divert gate we have here. Divert gate is O25. This is the divert gate. Okay. This motor is divert conveyor O22. Divert. So we have 3 conveyors. सब मैंने input दे दी हैं. कितनी हो गई हमारे पास? This is done. LS114 is not done. यहाँ से अब ये देखें, यहाँ से आपके पास ये 2 portions हैं, जहाँ से एक scrap और एक bottom. I114 पे 114 पे है. We have the divert valve, divert gate. Okay, so what will be the I think we are done with this cap motor. ये वाली motor थी scrap conveyor O2, and then we have scrap conveyor. Sorry, what was the address here? O21 O, sorry, 2/1. Okay. Anything else जो अगर मैंने मिस किया तो काइंडली मुझे बताएं. कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? So what we have here is so how many inputs and outputs? By the way, we also have these switches A, B. There is one switch here, B. ये I13 है. This is connected to I12. Click करें I13, and then we have I14. So we have 4 selection switches. I13, I14, and I15. Right. This is for selection switch. So this is A, and then we have B, and then we have C. Okay. Okay. And then we have start. Start is at this is normally open push button. I11 पे है start button हमारे पास. I11 पे है we have the start button, and then we have stop at I10. I10. This is the stop. Okay. And then we have this is the we can enter I15, and we also have a BCD input. Now this is very interesting. आप enter कर सकते हैं मुख्तलिफ counts. So this is enter I15 पे I15. So this will be an enter button for, or yeah. Can anybody tell me what is this? This is BCD input I3 पे. So I3 is a BCD input. BCD is the number that we can give कि आपने कितनी count करना है किस चीज के लिए. Or the small
is the output. ये marks इसके ऊपर लगा हुआ है 2 से लेके 11 तक. फिर we have the large display. So these 4 are the displays, right? Or let me take the snap here so that कि अब मैं आपको थोड़ा take the snap here. Okay. Is it visible? चलिए जितना भी नजर आ रहा है इसमें हम take it here. Okay. So the second thing here, ये अब हमने IO list बना ली. The second thing here is now we need to do something called operation philosophy. Now we need to develop the second thing, which is how the plant will operate. अच्छा, keep in mind that कि हमें ये जो operation philosophy है इसको इस तरह से develop करना होता है कि focus on the outputs and figure out the input logic. ठीक है? So if I come back here in this bottom line simulator, so what do you think we have? अब हमें यहाँ bottom line में करना क्या क्या होगा? Like हम सबसे पहले तो इस मोटर को स्टार्ट करना है और ये मोटर हमारे पास है कन्वर्टेड मेन हमारे पास जो ये मोटर है इस मोटर को हम स्टार्ट करेंगे when we press this button. So pressing this button will turn on this main conveyor. इस main conveyor के बाद now help me, the bottle will start doing it. So let's do the first thing. हम एक gradually programming भी करते हैं. तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि I will try to make like कि मैं start करूँ और start की वजह से फिर मेरे पास जो main conveyor belt है this motor it should start working. और main जो motor है इसका address हमारे पास हमने देखा था. The address was this. So it will be like this one from here. इसका एड्रेस होगा O2/0 और स्टार्ट जो है स्टार्ट का एड्रेस हमने start was here I11. So this will be I11. I1/1. Okay, so allow me to do this project now. Let me take the attendance. LD. Okay. Okay. So अब हम इसकी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं. Let's start a simple emulator here. Or okay. What is the problem? Okay. तो अब हम इसको प्रोग्रामिंग मोड में लाते हैं and then we will do something like this. Start push button and output latch here, or
we need to latch, so इसके लिए seal in contact, we need seal in contact for this, or okay, so this will be the output. क्या address था इसका? This was O2/0, and the input was 11 I11. Okay, O2/0. ठीक है, am I done? या इसमें कुछ और भी करूँ? So I will upload and then run it. इसको start करें. So now you see कि इसको थोड़ा slow कर लेते हैं. Okay, and now it is also good कि अगर हम इसको observe करना चाहते हैं तो we will see. I want to see कि ये input जो हैं वो inputs का क्या status है. So let me add few rugs here. और हर रग पे मैं एक input add कर लेता हूँ sensor की. अलग अलग भी कर सकते हैं, but I prefer it here right now. Or let's say this is your the first sensor input level switch I16 पे. Second is the ILS2 है 17 I17, and the third one is I18 I18. So let me try to download. ये तीन रग्स मैंने ऐड किए हैं. It is only to see के क्या status है. So right now we have a bottle here, so it shows. Start करते हैं हम इसको. Now it's working. इसको और slow कर देता हूँ. So the moment आपके पास यहाँ पे bottle आएगी, ठीक है, ये जैसी bottle आती है तो it is able to. Okay, there is a presence of bottle. फिर the second one, this one, ये जब I17 जो है, this will be touched by the bottles जिनकी which are larger. और जब small bottles होंगी तो ये आपके पास कोई signal नहीं दे रहा. I17 को you can see there is no signal, and we expect अभी आपके पास larger bottle है तो this will give us a signal here. ठीक है, अभी देखें ये वाली bottle 11 number जो है it's moving, and then when it touches here up 17 पे, ठीक है. And also for this one, जो तीसरा I18 से उसको चेक करेगी, ये सेंसर वो चेक करेगा जब कोई ब्रोकन बॉटल है. तो अभी तक कोई ब्रोकन बॉटल नहीं थी, बट वी आर हैविंग वन बॉटल कमिंग हियर जो कि ब्रोकन है. थोड़ी सी मैं अगर इसकी स्पीड बढ़ा दूं. ओके, नाउ यू विल सी कि जब ये I18 को नोट करें राइट हैंड साइड पे, सो जैसे ये बॉटल आएगी आपके पास ब्रोकन बॉटल, तो ये ग्लो हो जाना चाहिए. सो ट्राई टू सी दिस वन. द मोमेंट ये यहाँ पे आएगी तो I18 will glow here. Okay, so यहाँ से अब तो जैसे ये ग्लो कर चुकी है, तो now you have to throw this from the scrap gate. अब इसको कैसे आपने थ्रो करना है, this is the logic जिसको अभी हम डिटेक्ट करेंगे. और okay, so what about the, so we have to develop a complete logic about it, and then we have the BCT input here. Stop. अब मैं इसको stop करना चाहता हूँ. This is, I am unable to stop it. What should I do to stop? ये बंद नहीं हो रहा. कोई मेरी help करेगा? Anyone from you? Anyone can help me? ये stop नहीं हो रहा. इसको stop कैसे करूँ मैं? What should I do? जी, I'm waiting even in the chat. इसको stop करना है, क्या करूँ मैं? आप लोग को आवाज आ रही है बच्चों? हेलो.
नहीं, मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, तो कैसे स्टॉप करूँ ये? थ्रू सब इनपुट इंटरेक्शन। ये प्लांट चल रहा है, आपने ऑपरेट किया पीएलसी को, प्रोग्राम इज देयर, तो प्रोग्राम के थ्रू हम बंद करना चाहते हैं, क्या करेंगे? By the way, we have the run LED here as well. The operation goes like this, or we can do one thing. ये जैसे smaller bottles हैं, तो smaller bottles नीचे आ जाएं. अच्छा, अगर मैं इसको gate O25 को अगर मैं open करूं, yes, what programming changes I should make? मुझको ये stop button को incorporate करना पड़ेगा. This is what I'm asking you. Programming mode में वापस आके आप इसको stop button को incorporate करेंगे. Stop button is normally closed like this one, और इसका जो I1, I constant 0, download this one. Start करें. Turn this to okay. I think it will be working. Start करेंगे तो it starts working, or we have answer here. Reset the coil. Okay. And when I stop, तो ये बंद हो जाएगा. अच्छा, अब इसकी ओवरऑल जो फिलॉसफी है वो क्या होनी चाहिए? So what we can have here is, इसकी अब हमें ऑपरेशनल फिलॉसफी बनानी है. कैसे इसकी ऑपरेशनल फिलॉसफी किस तरह की होनी चाहिए? So this is our plan, और इसकी जो ऑपरेशनल फिलॉसफी है, this should go like this. This consists of 3 small conveyors. So can we have a, let's say this is the main conveyor, main conveyor number 1. We have a scrap conveyor here. Okay, this whole is the scrap conveyor. We have conveyor 2. ये सिर्फ उस वक्त it should work only when we have some kind of a broken bottle. अगर broken bottle होगी तो फिर broken bottle में it should come here. यहाँ पे scrap होगी और फिर bottle fill होगी, यहाँ से चली जाएगी. ठीक है. और then we have this the third one, and we are actually, what we are doing here is we have we will, in the end, the output product आपके पास आएगा. The product will be 2 small filled bottles, and we have large filled bottles. ठीक है, ये दो होंगी. If you take this one as the large bottles, out the product line हमारे पास 2 हैं. ठीक है, एक product line हमारे पास ये है और एक product line हमारे पास ये है. ठीक है. So we can say that this is A. A is already used here in, okay. Okay, let me call A and product B. Okay, but don't confuse this with this switch. This switch can be used to for many purposes. ये अच्छा, दूसरा ये कि we have a counting here. This is the place we have counting of scrap, number of scraps. कितने आपके पास rejected bottles हैं? It will come here. कितनी small filled हैं, कितनी large filled हैं, and how many boxes of scrap
have you done it. This is an automatic switch here. जब हम इसको program करेंगे, you will see कि scrap automatically will fill और फिर उसको forward कर देगा. We can use it separately. अच्छा, so this is the overall thing. So and this is the filling, the cap, this is the filling. ये यहाँ पे अब आपके जो single filling station था उसकी अब ये extended form है. So this is a filling station. और इसके ऊपर आपके पास कैपिंग है, यहाँ पर हो रही है कैपिंग, यहाँ पे आपके पास फिलिंग स्टेशन है. What is the use of this place? This place is to divert the product. यहाँ से वो A प्रोडक्ट यहाँ पर चले जाएंगे और जो B प्रोडक्ट्स हैं they should come here. ठीक है, ये दोनों जो है आपके पास A और B में डिवीजन है. And this is the place जहाँ से आप रिजेक्ट करेंगे. This place you will reject from here. जो भी broken है, अगर ये broken को detect करेगा ये, so there are control loops. उस जो नीचे वाली मोटर है ये है. So these are the actuators. This is connected. This sensor is connected to this system. और ये जो आपके पास size का है, this is connected with your diversion here. Okay, this diversion is connected with the this size. Okay, and sometimes यहाँ पे ये वाला जो sensor है, this will show जो आपके पास input आ रही है उसमें बाज़ वक़्त there are bottles, sometimes you don't have bottles, sometimes we have the bottles, sometimes you don't have bottles. So this will make sure catching. And then there is a counting here. इसको आपने reject कब करना है? This we will see. और हम हर एक के साथ, for example, if I select A, we can program it for example A. A may be product A और फिर product A के लिए मैं उसको input दूंगा कि this is the value for the product A. So you can see select A and then enter bottles for product A. ठीक है, उसके बाद इस तरह से आप प्रोडक्ट बी के लिए सेलेक्ट करेंगे और उसमें बता दें लेट्स से कि यू नीड 100 बॉटल्स ऑफ ए प्रोडक्ट ए यानी लार्ज फिल, और हो सकता है कि आपके पास 200 बॉटल्स आर नीडेड फॉर द स्मॉलर थिंग. सो वी विल कंटिन्यू विद दिस वन एंड अदर. आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको इंस्टॉल करें इसकी एंड ट्राई टू डेवलप the logic, the control philosophy, especially the control philosophy of this part. उसके बाद फिर हम इसकी programming को हम complete कर सकेंगे. ठीक है. Any questions till now? Now our target is you are done with the आप लोगों ने पहला वाला काम जो है वो कर लिया, लेकिन उसमें छोटा सा काम रह गया था और उसको मैं यूँ करना चाहूँगा कि give me a minute here. Is it possible कि जब हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि can you for this one इसमें क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉक्स जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी टाइम में आता है? कैन यू मेक श्योर इसको एसेस कर सकते हैं या नहीं? इसको सोचिएगा, उसके बाद यू विल बी एबल टू डू द टास्क दैट आई मेंशन बिफोर, ये जो मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था सेकंड वाला. ठीक है, सो बाय टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग आप ये काम कर सकते हैं. सो द ओनली थिंग यू नीड टू फाइंड इज कि ये कितने स्कैन के अंदर, टाइम के अंदर जो है ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. लेट मी टेक द स्नैप फॉर द अटेंडेंस. ओके, कोई questions? Any questions? Yeah, we will do the. अच्छा, ये bottle filling इंशाल्लाह फिर हम next time करेंगे.